the last lecture, last to last, sorry. And then we did suspense account in the last lecture. First two lectures we did two-sided errors, and then we started with the suspense account part. Let's brief up fatafat what was suspense account. You remember what was suspense account? Is there a normal account like suspense account in the normal course of business? No. No. There is no suspense account as such in the normal course of business activities, right? So why does it come for the first time in the books? When does it appear for the first time in the books of accounts? कब आता है? Whenever we make our trial balance, okay? Whenever we make our trial balance, you have done the entire chapter of trial balance, right? They are nothing but the closing balances of the ledger accounts, all the ledger account balance का list. So normally जब भी आप trial balance बनाते हो, आपका trial balance tally होना चाहिए because we are making all the ledger on double entry system. Every debit has a corresponding credit, right? So normal course में आपका trial balance tally होना चाहिए, correct? But sometimes it does not tally. Forcefully tally करने के लिए put an extra account in the trial balance that is called as suspense account. Got it? To forcefully tally the trial balance, we put an artificial account that's called suspense account. Keep that in mind. The suspense is not a regular account, it is just an artificial account, a filler to tally the trial balance. Now, once you see suspense account, it indicates that there are some errors. Achha, what type of errors are indicated by suspense account? Two-sided errors or one-sided errors? Presence of suspense indicates which type of errors are there in the books, two-sided or one-sided. What do you think? One-sided. One-sided. The suspense trial balance tally क्यों नहीं होता है? Because of one-sided errors. Two-sided errors से trial balance को कोई फर्क पड़ता नहीं. Okay, it will tally, self-tally. So one-sided errors की वजह से suspense account appears. Okay, that's a hint that there are some one-sided errors. फिर you find out, you search the books, and you get the list of errors. अभी आपको वो मगजमारी नहीं करना है क्योंकि आपको question में errors दिया हुआ है. So you rectify the errors, whether two-sided, one-sided. Okay, one-sided भी हमने rectify किए थे with the help of suspense. Two-sided without suspense. So those errors you rectify, and then again you make a suspense account. At the end of rectification, you try to make a suspense account and check whether it tallies or not. If it tallies, it's a hint that all one-sided errors have been rectified. If it does not tally, okay, जो हमने दो sum किए थे last lecture में उसमें tally नहीं हुआ था, it means that there are still some one-sided errors yet to be rectified. Still some one-sided errors yet to be rectified. That note, remember, I had given you. अगर वो टैली नहीं होता है सस्पेंस मतलब कुछ वन साइडेड एरर अभी भी रेक्टिफाई करने बाकी हैं. ओके, नोट लिख देना है. लास्ट लेक्चर वी टुक टू सम्स एंड दोस टू सम्स में सस्पेंस डिड नॉट टैली. नाउ वी आर टेकिंग द सम्स वेयर द सस्पेंस टैलीज. सो वी टेक सम नंबर 7. Sum number 7 you take. All of you draw for sum number. What is the page number? 96. Page 96. Sum number 7. Page 96. Second batch these sums have been done. Second batch में जो tally नहीं हुआ वो बाकी है. हमारे batch में जो tally नहीं हुआ था वो मैंने करवा दिया था. ये दो बाकी है. Sums were interchanged in the last lecture. 7 sum. Those who had attended the second batch on Saturday, okay, उनके लिए ये दो सम रिपीट हो गया है. Okay, so you need to go through the other two sums which I'll take in the second batch today, the one where the suspense does not tally. Sir, last time I attended second batch, so I leave this one. I did this. नहीं but आगे और sums है ना extra. ठीक है, no problem. You can attend this and do one thing. You attend at 9:45 only then directly. If you have attended the second batch, okay, then you attend at 9:45 only directly. Second batch. Bye, sir. Even I attended the second batch, but can I attend this and then only for the two sums I will sit in the second batch and then No problem, no problem. No problem.
Videos on, all of you. See sum number 7. The trial balance shows an excess debit of 2,800 which was transferred to suspense. Now looking at the sum carefully, the trial balance shows an excess debit. The trial balance shows an excess debit. What does that indicate? When you made the trial balance, when you totaled up the trial balance, your debit side was more than the credit side, right? Your debit side came to, let us say, 12,800, but your credit side total was 10,000. So debit was in excess than the credit side. Debit was more than the credit side. So where did you put this difference? To forcefully tally the trial balance, you put this difference under suspense account. Now your total is 12,800. Did you understand this? All of you? So ट्रायल बैलेंस का जो साइड छोटा होगा सस्पेंस वही साइड पे बैठा होगा. If the trial balance credit side is shorter, then suspense will sit on the credit side. If the trial balance debit side is shorter, then suspense will sit on the debit side, and so on and so forth. Is that clear? So keep that in mind. So here the credit side was short, the suspense is sitting on the credit side. Okay. So we know this first part, no need to draw that trial balance. That was just for your understanding. And then you draw the 4 columns of rectification, which we do, 2 on the left, 2 on the right, 4 parts of rectification, wrong entry, right entry, reverse entry, and wrong entry, reverse entry, correct entry, and rectified entry. So draw the 4 columns. Let's begin with the first one, sum number 7. What are the given? See. Salary paid 16,000 to penal was debited to penal's account. What's your correct entry for salary paid to penal? Salary to cash. Salary to cash. Like the salary to cash is your correct entry, 16,000. 16,000 salary to cash, that is the correct entry. It was wrongly debited to penal's account. So instead of debiting salary, we have debited penal. So what is the wrong part over here? I think it is penal to cash. Huh? Penal to cash. It was debited. Yeah. करना था salary में post, कर दिया penal में post. So that's a error of principle. Remember? Got it, all of you? Salary to cash का हो गया, penal to cash. Reverse it, you get cash to penal. Cash was right. Salary का penal account में डाल दिया. Can cancel out cash entirely. What are you left with? Salary account debit to penal account, that is 16,000. Salary to penal, that is 16,000. Error of principle. No suspense involved because this was a two-sided error. Instead of salary, we had debited penal. Some debit or some credit was there. So there was no imbalance in the debit credit component. कोई imbalance नहीं था. Debit credit में same balance था. Tally हो गया था entry. खाली account wrong था. Salary के जगह penal. That's an error of principle. Is that clear? Now, second one. Goods purchased of 3,500 from Ajay were recorded as 35,000 in purchase book. पहले तो मुझे बोलो what is the correct entry for goods purchased from Ajay? What should be the correct entry? Ajay account. Purchase to 500. Ajay. Purchase to Ajay 3,500, right? Purchase to Ajay 3,500. अभी ध्यान से पढ़ो क्या दिया है. It was entered in the purchase book as 35,000. Now what is a purchase book? इधर थोड़ा बत्ती चमकना चाहिए. What is a purchase book? A journal. A journal, right? Purchase book is a journal. They have not given that in purchase account. We have written that wrong part. ऐसा कुछ नहीं बोला है. या Ajay's account
अकाउंट मतलब लेजर, दे आर टॉकिंग अबाउट लेजर, ओके, पोस्टिंग एरर। ऐसा कुछ नहीं दिया कि अजय अकाउंट में गड़बड़ है, परचेज अकाउंट में गड़बड़ है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या दिया? परचेज बुक में ही रॉन्ग एंटर किया है। इफ यू एंटर समथिंग रॉन्ग इन द परचेज बुक, will there be a mistake in one account or both the accounts? जर्नल में ही आपने गलत, both the accounts, वहीं से पोस्टिंग होती है, राइट? सो कैन यू गेस द रॉन्ग एंट्री ओवर हियर? व्हाट शुड बी द रॉन्ग एंट्री? रॉन्ग एंट्री क्या होगा आपका? थिंक। 35,000. Both the amount would be 35,000 or only one amount would be 35? What do you think? Both the amounts. Both the amounts. Purchase और अजय दोनों में गड़बड़ है. Did you all get the point? Hello? So purchase and अजय both are wrong क्योंकि आपने बुक में ही गड़बड़ कर दी है, जर्नल में ही गड़बड़ कर दी है. परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न्स बुक, इसमें रिकॉर्ड करते वक्त गड़बड़ कर दी है. सो दैट मीन्स बोथ द अकाउंट्स आर रॉन्ग. ओके, सो दोनों में 35,000 आएगा. Then you reverse it, so you get Ajay to purchase 35,000, and then I think you can cancel out Ajay. You can cancel out purchase, so you're left with 31,500 on both the sides. So what's your rectified entry? I think Ajay to purchase 31,500. Ajay to purchase 31,500. That's your rectified entry. Ajay to purchase 31,500. That's your rectified entry. दोनों जगह 31,500 बच जाएगा. So it's Ajay to purchase 31,500. Is that clear? So when you make an error in journal, it means that you have made the error in both the accounts. Okay, not only single account, in both the accounts. Now 1,600 paid for printing bill was posted to the credit side of printing bill account. 1,600 paid for printing bill. What do you think should be the correct entry? Printing account debit to cash. Printing to cash. 1,600. It was posted to the credit side of printing account. It was posted to the credit side of printing account. Now read properly. You have not made any error in the journal. Are they talking about journal? कोई बुक में एंटर करते हुए गड़बड़ किया है या ऐसा कुछ नहीं. क्या बोल रहा है वो लोग? You have credited this to printing account. करना था प्रिंटिंग को डेबिट, कर दिया प्रिंटिंग को क्रेडिट. What about cash? Is there any error in cash component over here? Think. Is there any mistake in the cash? There's nothing specified about cash. Nothing is specified about cash. They are only talking about printing account. So printing को credit दिया है, cash को debit दिया, ऐसा नहीं बोला है. पढ़ो ध्यान से. It was credited to printing. It was debited to cash, ऐसा नहीं दिया है. मतलब cash तो right ही है, printing credit हो गया है. तो printing भी credit और cash भी credit. This is the mistake. Error of commission, wrong side. करना था कैश में बाय प्रिंटिंग और प्रिंटिंग में टू कैश. आपने क्या किया? कैश में भी बाय प्रिंटिंग और प्रिंटिंग में भी बाय कैश, दोनों में बाय बाय कर दिया. दोनों में वी रोट बाय बाय. वी क्रेडिटेड बोथ द अकाउंट्स, प्रिंटिंग एज वेल एज कैश. बोथ द अकाउंट्स गॉट अ क्रेडिट. दैट वाज एरर ऑफ कमीशन. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? मिस्टेक समझ में आया? प्रिंटिंग और कैश दोनों रॉन्ग हो गया. सो डैश, डेबिट में डैश है, डैश मतलब इफेक्ट ही नहीं है. देयर इज डैश, नथिंग. भाई ने दोनों को क्रेडिट दे दिया, प्रिंटिंग एज वेल एज कैश. नाउ यू रिवर्स इट, सो यू गेट व्हाट? प्रिंटिंग कैश टू डैश 1,600 and 3,200. Can you cancel out anything? So I can cancel cash, I think, right? Can cancel cash. What are we left with? We are left with printing account debit. On the debit side, it will become 3,200. You cannot cancel, so you need to add it. Printing account debit to what? Credit किसको जाएगा? Dash है. Dash will become what in the rectification? Suspense. Suspense.
that dash will become suspense 3200. This was a one-sided error. समझ में आया? एरर देख के वन साइडेड एरर क्यों था? गड़बड़ आपने किस में की थी? सिर्फ प्रिंटिंग में की थी. करना था डेबिट, कर दिया क्रेडिट. Then you gave it a double debit and then you rectified it. खाली प्रिंटिंग अकाउंट में गड़बड़ था. It was credited to printing account. Did you get the logic? It was a one-sided error. So other account would be suspense account over here. So printing to suspense. जम रहा है अभी? See the third one, fourth one. Sorry. Purchase goods from Rajesh worth 7,700, not posted to his account from purchase book. पहले तो try to get the correct entry. So purchase goods from Rajesh 7,700. Think what should be the correct entry? Purchase goods from Rajesh. account to Rajesh account. Purchase to Rajesh होना चाहिए 7,700. That should be the correct entry. Okay? पढ़ो अभी ध्यान से. It was not posted to his account from the purchase book. मतलब purchase book में लिखा राजेश, but राजेश के अकाउंट में लिखना भूल गए. तो सोचो क्या होना चाहिए रॉन्ग एंट्री इसका? Think. This is an error in the ledger. So कौन से अकाउंट में नहीं लिखा है? राजेश के अकाउंट. राजेश में नहीं. Purchase to dash. तो purchase to dash. Why are we assuming that purchase में हो चुका है? Because they have told that it is not posted to his account. His account. मतलब purchase book में हुआ है, मतलब purchase account में हुआ ही होगा, टोटल वहीं पे जाता है. तो राजेश के अकाउंट में, क्योंकि पोस्टिंग राजेश के अकाउंट में ही होती है, परचेज अकाउंट में तो टोटल जाता है. तो पोस्टिंग नहीं हुआ मतलब राजेश का अकाउंट ही खाली पड़ा है. ओके, बट इसके जगह ऐसा दिया होता, दिस वाज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक ओनली. जर्नल में ही रिकॉर्ड नहीं किया, जर्नल में परचेज बुक में ही रिकॉर्ड नहीं किया. देन इट वुड हैव बीन व्हाट टाइप ऑफ एरर? Two-sided. एंड टू साइडेड. तो कंप्लीट ओमिशन. देन पूरा नो एंट्री हो जाता. आर यू गेटिंग द डिफरेंस? अकाउंट में न लिखना और जर्नल में न लिखना ये दो अलग चीजें. अकाउंट में नहीं लिखा मतलब पार्शियल ओमिशन, जर्नल में नहीं लिखा मतलब कंप्लीट ओमिशन. ओके, सो परचेज टू डैश हो जाएगा. यहाँ पे राजेश के अकाउंट में नहीं लिखा है. रिवर्स करो तो यू गेट व्हाट? राजेश, सॉरी, रिवर्स करोगे तो यू गेट व्हाट? डैश टू परचेज. डैश मतलब इफेक्ट ही नहीं है, वो 7700 खाली पड़ा है. 7700 परचेज में लिखा हुआ है, तो डैश टू परचेज. कैन यू कैंसल आउट एनीथिंग? I think you can cancel out purchase. You're left with dash to Rajesh. What will that dash become now? What will that dash become now? Suspense. So suspense to Rajesh. Suspense to Rajesh. That is your rectified entry. Suspense to Rajesh. That is your rectified entry. Is that clear? Understood? Next one. Freight paid 8,300 was posted twice to the freight account. Freight paid 8,300. पहले तो try to get the correct entry. What is the correct entry for freight paid? Freight to cash. Freight to cash or freight to party. Freight to cash. Freight to party का freight to party तो outstanding है तभी आएगा. Freight to cash ही आएगा ना freight paid का entry. You have paid the amount. So it is freight to cash 8,300. Is that right? Freight to cash 8,300. That should be the correct entry. Correct entry दिमाग में fit कर लो. Now try to arrive at the wrong entry. ध्यान से पढ़ो. It was posted to the freight account 2 times. Freight account में 2 बार लिखा. Freight account में 2 बार लिखा. तो क्या होगा wrong? Freight account It is 600. So freight cash to account cash. 8,300 to हाँ, cash. कैश में 2 बार लिखा है क्या?
Only once. Only once. Freight में you have written twice. So this is not an error in the journal. If they would have given ना कि cash book में 2 बार लिखा तो दोनों में 16,600. बट ऐसा नहीं बोला कि कैश बुक में 2 बार लिखा है, उधर कैश बुक में 1 ही बार लिखा है, बाय फ्रेट 16,600. फ्रेट में 2 बार लिखा, टू कैश 2 टाइम्स यू हैव पोस्टेड इन फ्रेट अकाउंट. तो गड़बड़ इज ओनली इन फ्रेट अकाउंट. फ्रेट इज 16,600, कैश इज 8,300 ओनली. रिवर्स इट, सो यू गेट डैश कैश टू फ्रेट dash cash to freight 8,300, 8,300 and 16,600. Can you cancel out anything? Check properly. Can you cancel out anything over here? So the amount in freight and cash. Cash. The freight amount will be over here 8,300. Exactly. Cash can be cancelled entirely and freight can be cancelled to the extent of 8,300. So what are we left with at the end? This dash remains on the debit side and freight remains on the credit side. So what is your rectified entry? That dash will automatically become suspense account, right? So your rectified entry is suspense to freight. Your rectified entry is suspense to freight. Suspense to freight 8,300. Is that clear? All of you got that? Suspense to freight. डैश अभी फ्रेट, डैश अभी सस्पेंस बन जाएगा. लॉजिकली सोच सकते हो आपने फ्रेट को डबल डेबिट दिया था, अभी एक क्रेडिट देके उसको नलिफाई किया. सिंपल. डबल डेबिट था, 1 credit you gave and you nullified the entry, so it becomes suspense to freight. Total of purchase book 23,000 was posted to the purchase account as 13,000. Yeah, the totaling error, casting error we discussed in the last lecture also. Casting error, totaling error, how to tackle them? It's very simple. Get the, इधर हुआ क्या है? Total of purchase book 23,000 was posted to the purchase account as 13,000. Posted मतलब entry का posting error नहीं है ये, total posting error. Total ये आप बनाते हो ना, you make this purchase book. याद है आप लोग ये subsidiary बनाते थे, inward, invoice, number and amount. परचेज बुक में अजय, विजय, श्याम, XYZ और ये टोटल आता था परचेज बुक का. दिस टोटल वाज 23,000. अब ये टोटल वी यूज्ड टू राइट इन परचेज अकाउंट, रिमेंबर, एज टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक. We used to write this 23,000 in the purchase account on the debit side. Did you all remember? So यहाँ पर instead of writing 23,000, what did we write? 13,000. 13,000. लिखना था 23, लिख दिया 13. इसके वजह से टोटलिंग एरर हो गया. कौन से अकाउंट को ये अफेक्ट करेगा? ये टोटलिंग एरर लेजर के परचेज लेजर में. हाँ, तो परचेज अकाउंट को अफेक्ट करेगा सर. तो परचेज अकाउंट टोटलिंग एरर कैसे टैकल करना है, ध्यान से सुनना. First, try to get the normal balance of the account. What is the normal balance of purchase? Debit or credit? You know that. डेबिट बैलेंस. Debit balance because it is an expense. Or if you are getting that, purchase का normal balance क्या होता है? Debit. अभी debit balance purchase account क्या हुआ है? Overcast हुआ है कि undercast हुआ है? वो देखो. Undercast by 10,000. Undercast by 10,000. Undercast means under totaling हो गया है purchase का by 10,000 rupees. Can you all see that? कैसे अंडर टोटलिंग हुआ है समझ में आ रहा है? आपको लिखना था 23, आपने लिख दिया 13. तो परचेज अकाउंट को कम कर दिया ना गलती से, बाय मिस्टेक यू हैव रिड्यूस्ड द परचेज अकाउंट. सो व्हाट वी नीड टू डू नाउ? बढ़ाना है कि कम करना है? Need to increase. So you will give बढ़ाना है. debit of 10,000. हाँ, तो डेबिट को बढ़ाना है तो गिव इट अ डेबिट. याद है ये लॉजिक लास्ट टाइम भी बताया था. डेबिट को बढ़ाना है तो गिव इट फर्दर डेबिट, सो इट विल इंक्रीज. डेबिट को कम करना है तो क्या करने का? गिव इट अ क्रेडिट. क्रेडिट को बढ़ाना है, क्रेडिट को इंक्रीज करना है, गिव इट अ क्रेडिट. और क्रेडिट को कम करना है, सो गिव इट अ डेबिट. कास्टिंग का लॉजिक समझा? कोई भी अकाउंट है उसमें डेबिट बैलेंस है, अगर नॉर्मल डेबिट बैलेंस है और उसको बढ़ाना है तो और डेबिट दो, उसको कम करना है तो क्रेडिट दो. कोई अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, उसको बढ़ाना है तो गिव इट अ क्रेडिट और उसको कम करना है तो गिव इट अ डेबिट.
So डेबिट बढ़ाना है, डेबिट दो, कम करना है क्रेडिट दो, क्रेडिट को बढ़ाना है, गिव इट अ क्रेडिट, कम करना है, गिव इट अ डेबिट. तो यहाँ पे परचेज इज हैविंग अ डेबिट बैलेंस, उसको बढ़ाना है, तो डायरेक्टली इन द रेक्टिफाइड एंट्री. अच्छा, इज देयर एनी रॉन्ग रिवर्स करेक्ट एंट्री फॉर टोटलिंग? इज देयर एनी रॉन्ग रिवर्स करेक्ट जर्नल एंट्री फॉर टोटलिंग? टेल मी. कोई जर्नल एंट्री होता है टोटल लिखने का, टू सन्ड्रीज का कोई जर्नल एंट्री किया है हमने अभी तक? No. No. कभी नहीं. So there is no wrong entry, no reverse entry, no correct entry. ये खाली टोटल लिखने में गड़बड़ कर दी थी तुमने, इसको अभी रेक्टिफाई कर रहे हो. कैसे करोगे? परचेज को बढ़ाना है, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, उसको बढ़ाना है तो गिव इट अ डेबिट, राइट. उसको वी हैव टू इंक्रीज. अच्छा, कितने से बढ़ाना है? 10,000 से बढ़ाना है, 13 से बढ़ाना है कि 23,000 से बढ़ाना है? 10,000. 10,000. Purchase account debit to suspense account 10,000. Corresponding credit and debit will always go to suspense. In your casting error, in your totaling error, corresponding debit credit will always go to suspense. Corresponding debit credit will always go to suspense. So entry will become purchase to suspense 10,000. इसको जब post करोगे तब ऐसे होगा, परचेज में टू सस्पेंस और सस्पेंस में बाय परचेज 10,000. अब ये बैलेंस आ गया ना 23. नाउ दिस विल बी ट्रांसफर टू योर न्यू ट्रायल बैलेंस. दिस विल बी ट्रांसफर टू योर न्यू ट्रायल बैलेंस. डिड यू गेट दिस? One more example of casting error. You tell me now. Think about it, all of you. Loan taken account was overcast by 10,000 rupees. What is the balance of loan taken? Debit or credit? Debit. Loan taken. Credit. Credit. It's a liability. Okay. It was overcast by 10,000 rupees. मतलब आपने गलती से ज्यादा बता दिया, अभी आपको कम करना है, तो क्या करोगे? Loan taken account debit to suspense. Loan taken account debit to suspense. क्यों? क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है ना, और ज्यादा बता दिया गलती से, अभी कम करना है, क्रेडिट को कम करना है, तो क्या करने का? गिव इट अ डेबिट. सो लोन टेकन टू सस्पेंस. लोन टेकन टू सस्पेंस. सेल्स अकाउंट वाज अंडरकास्ट बाय 500 rupees. Sales account was undercast by 500. Now Suspense think. to sales. Absolutely. Think about it. Sales has got which balance? Credit balance. It was undercast, मतलब टोटल कम बताया है. अभी आपको क्या करना है? बढ़ाना है. तो क्रेडिट को बढ़ाना है तो गिव इट अ क्रेडिट. तो सस्पेंस टू सेल्स. सेल्स क्रेडिट होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग डेबिट विल ऑलवेज गो टू सस्पेंस. डिड यू गेट इट? लॉजिक बैठ रहा है? कास्टिंग एरर्स में कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है, सीधा रेक्टिफाइड एंट्री, क्योंकि वो एक लेजर में गड़बड़ किया है. तो एक लेजर को जाके आप अटैक करो, उसमें डेबिट को बढ़ाना है तो गिव इट डेबिट एंड क्रेडिट विल गो टू सस्पेंस, और डेबिट को कम करना है तो गिव इट अ क्रेडिट एंड डेबिट विल गो टू सस्पेंस, एंड क्रेडिट है तो वाइस वर्सा. इज दैट क्लियर? कास्टिंग एरर्स कैसे टैकल करना है, बैठ रहा है दिमाग में? टेल मी, लास्ट एग्जांपल, ऑल ऑफ यू थिंक. Purchase returns account was overcast by 1,000. Purchase returns account was overcast by 1,000. Purchase return account debit to suspense account 1,000. Purchase return to suspense होगा क्योंकि purchase return has got credit balance, वो ज्यादा हो गया है, अभी give it a debit क्योंकि उसको कम करना है. Purchase return को कम करना है तो give it a debit. Purchase return to suspense. Is that clear? Understood? So that was your casting error, totaling error, and that's it. You have completed the sum. Make a small suspense account just below the working and check whether it tallies. Suspense account. This is your suspense account format. Debit, credit, particular amount. JF. No need of date. All the entries are happening on one single day, last day of the year. No need of any date. Keep the videos on, all of you. Off videos will be out now. Now, in the suspense account, what is the opening balance of suspense? Check and tell me.
We saw that in the first part of the trial balance. Suspense was sitting on the credit side, right? So what is the opening balance of suspense account? Debit balance or credit balance? Think. Which side is suspense sitting on? Credit. Credit side. So what balance will suspense have? Obviously, credit balance, right? Buy balance BD. बनाया ना ट्रायल बैलेंस, जो आइटम डेबिट में होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है, जो क्रेडिट में होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट? The suspense is having a credit balance, so buy balance brought down on top. पहला लाइन पे sorry, in suspense account लिख दो buy balance brought down, that is 2800. And now just post the entry that belong to suspense. तो पहला दो एंट्री में सस्पेंस है ही नहीं, इग्नोर करो. देन यू हैव प्रिंटिंग टू सस्पेंस, तो प्रिंटिंग में टू सस्पेंस आएगा और सस्पेंस में बाय प्रिंटिंग अकाउंट अमाउंट इज 3200. देन सस्पेंस टू राजेश, सस्पेंस में टू राजेश 7700. सस्पेंस टू फ्रेट, तो सस्पेंस में टू फ्रेट 8300. and purchase to suspense. Sorry. So purchase में to suspense and suspense में buy purchase. Suspense में buy purchase 10,000. Sorry. Check whether it tallies. Yes, sir, it is tallying. Tallies on 16,000. what does this indicate? All mistakes are rectified. Sorry. All mistakes are rectified कि all one-sided errors are rectified? One-sided errors and casting error are rectified. That is one-sided only. Na? Casting is one-sided only, one account. So basically suspense tally होने का guarantee क्या है कि one-sided errors have been rectified. Does it give a guarantee of two-sided errors? No. Two-sided errors तो अलग से ही आपको अगर ढूंढना पड़ेगा है तो, and they won't affect trial balance, they won't affect suspense. We need to rectify them separately. Here we assume that one-sided errors have been rectified. लिखने की जरूरत नहीं है. It tallies मतलब you assume that it is all one-sided errors are rectified. Okay. So I have doubted how the balance came in credit side. How the balance came in credit side. See on top what have they given? A trial balance shows an excess debit of 2800 which was transferred to suspense. So trial balance में debit बड़ा था, credit छोटा था. The debit total was 12,800, credit total was suppose 10,000. So debit बड़ा था, credit side छोटा था. तो gap कहाँ था? Credit side में gap था ना. तो gap को fill up करने के लिए हम लोग क्या घुसा देते हैं? Suspense. The suspense is sitting on the credit side, so it will have a credit balance. Got it? अगर suspense was sitting on the debit side, then it will have a debit balance. So what is this 2800? This 2800 has come due to mistakes. It has not come due to one single mistake. It has come due to multiple mistakes. किसी mistake की वजह से debit ज़्यादा होगा, किसी mistake की वजह से credit ज़्यादा होगा, किसी में debit कम, credit कम. ऐसे ऐसे suspense सब जगह आता रहा. और वो जो net effect है suspense का, वो दिख रहा है आपको as 2800. 2800 is the net amount, net difference of all the errors. Are you getting that? हमने किया था ना एग्जांपल में दो मिस्टेक्स, एक में डेबिट एक में क्रेडिट, फिर नेट 10,000 आया था क्रेडिट में. तो ऐसे ये नेट इफेक्ट है 2800. अभी एक एक एरर रेक्टिफाई किया और आपका सस्पेंस टैली हो गया, मतलब ऑल वन साइडेड एरर्स आर रेक्टिफाइड. जरूरी नहीं है हर बार टैली हो. लास्ट लेक्चर हमने देखा था वहां पे टैली नहीं भी हुआ था. अगर टैली नहीं हो रहा है, बैलेंस आ रहा है, तो क्या इंडिकेशन है कि ऑल वन साइडेड एरर्स आर रेक्टिफाइड और नॉट येट रेक्टिफाइड? Not yet. Not yet rectified. अगर सस्पेंस में बैलेंस आ रहा है मतलब अभी भी कुछ वन साइडेड एरर बाकी है रेक्टिफाई करने के लिए, ऐसा भी हो सकता है. Got it? Instead of making the whole ledger account, can we just, like, if it's a credit balance, can we add all the credit sides of the suspense account, like in the working note, and then subtract all the debit sides? हाँ, but they will ask you to make ledger. You are assumed to make ledger whenever you get the balance in suspense ना.
You make the ledger. They expect you to do that. So show that as a part of your answer always. Okay. Whether or not specified. Is that clear? This one? Come to sum number 6. Sum number 6 पे आ जाओ. Sum number 6, page 95. Sum number 6. Draw the columns. Wrong, reverse, correct, rectified. Sixth sum. Sum number 6, page 95. Wrong, reverse, correct, and rectified. Any other doubt, anyone? इसमें एंड प्रीवियस सम में क्या फर्क था जो लास्ट लेक्चर किया था? खाली एक ही डिफरेंस था, सस्पेंस. उसमें टैली नहीं हुआ था, इसमें टैली हो गया. टैली हो गया तो वन साइडेड है, रेक्टिफाइड. नहीं हुआ मतलब नॉट येट रेक्टिफाइड. सब नहीं हुआ, थोड़ा बाकी है एरर्स. अभी मेजॉरिटी कॉलेजेस में दिस सस्पेंस विल टैली. ओके, इफ दे पुट इन द सिलेबस, सो सस्पेंस विल टैली. खाली एक्सेप्ट फॉर एनएम. एनएम मिट्टी बाई में ये लफड़ा होता है, ये सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं होता है. ओके, so you have to write the note. We'll be doing both the types. Sum number 6 now. Look at the first line very carefully and try to find out what balance is suspense having. See, trial balance of Paresh showed excess credit of 1040, which was transferred to the debit of suspense account. Imagine, which side of trial balance is greater? Debit side. क्रेडिट बड़ा है, मतलब डेबिट छोटा रहेगा, तो गैप डेबिट में है और अपने को तो गैप फिलअप करना है, तो सस्पेंस को किधर बिठाया रहेगा हमने? डेबिट में कि डेबिट साइड. सस्पेंस इज हैविंग व्हिच बैलेंस? डेबिट बैलेंस. आर यू गेटिंग द नैक ऑफ फाइंडिंग द बैलेंस ऑफ सस्पेंस? इट्स वेरी सिंपल. ट्रायल बैलेंस में जो साइड छोटा है, सस्पेंस विल सिट ऑन दैट साइड, या जो साइड बड़ा है उसके ऑपोजिट साइड पे. Got it? If debit is greater, suspense will sit on credit side. If credit of trial balance is greater, suspense will sit on debit side. Okay? या फिर जो साइड शॉर्ट है उस साइड में फिल अप करने के लिए we'll put suspense. So suspense का I बैलेंस don't get that balance part where to be write the suspense account in the back. That's what I'm telling you now. अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड इज ग्रेटर, अगर डेबिट में 10,000 है और क्रेडिट में 9,000 है, तो जबरदस्ती 9 को 10 करोगे ना? कैसे करोगे? एक एक्स्ट्रा अकाउंट घुसा दोगे वहां पे, तो क्रेडिट में आएगा ना सस्पेंस. और ट्रायल बैलेंस में अगर क्रेडिट साइड में 10 आ रहा है, डेबिट में टोटल 9 आ रहा है, क्रेडिट में 10 है, डेबिट में 9 है, तो अभी डेबिट को जबरदस्ती 10 करना है, तो कैसे जबरदस्ती 10 करोगे? एक्स्ट्रा अकाउंट डाल दोगे उधर सस्पेंस. तो सस्पेंस विल सिट ऑन डेबिट साइड, राइट? तो अगर डेबिट साइड पे तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट साइड पे तो क्रेडिट बैलेंस. तो अगर डेबिट साइड पे तो टू बैलेंस बीडी और क्रेडिट साइड पे तो बाय बैलेंस बीडी इन सस्पेंस अकाउंट. गॉट इट? तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कैसे ढूंढने का? ट्रायल बैलेंस को देख के. ट्रायल बैलेंस का जो साइड बड़ा है, सस्पेंस इसका ऑपोजिट साइड पे बैठा रहेगा. ओके, एंड देन लेजर में तो उसके हिसाब से ही, अगर क्रेडिट में बैठा है तो क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, और डेबिट में बैठा है तो डेबिट बैलेंस टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन. ओके, लेट्स स्टार्ट. परचेज रिटर्न बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 1300. Overcast, cast. Casting error means which error? There is an totaling error. Totaling error. Casting means totaling. Totaling दिखेगा तो दिमाग क्लियर होना चाहिए. Is there any wrong, reverse, correct entry for totaling? No. No. Put a dash. Straight go to rectified entry. Now think. Purchase return book will affect which account? कौन सा अकाउंट का बात कर रहा है? टोटलिंग मतलब परचेज रिटर्न बुक मीन्स विच अकाउंट? परचेज रिटर्न अकाउंट, क्योंकि टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक गोज इन परचेज रिटर्न अकाउंट बाय सन्ड्रीज करके. तो परचेज रिटर्न बुक देख के कंफ्यूज मत होना. परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट मींस परचेज रिटर्न अकाउंट ओवरकास्ट. कास्टिंग एरर कभी दो अकाउंट में हो ही नहीं सकता, एक ही अकाउंट में.
So casting error will affect always one account, one-sided error it is. So never get confused in totaling. टोटलिंग एरर में परचेज रिटर्न बुक दिया है कि परचेज रिटर्न अकाउंट दिया है, इट इज वन एंड द सेम, तो वही टोटल जाता है. परचेज बुक का टोटलिंग एरर मतलब परचेज अकाउंट का टोटलिंग एरर, सेल्स बुक का टोटलिंग एरर मतलब सेल्स अकाउंट का टोटलिंग एरर, सेल्स रिटर्न बुक का टोटलिंग एरर मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट का टोटलिंग एरर. इज दैट क्लियर? यू राइट द टोटल्स इन दोज अकाउंट्स. अभी बताया ना आपको परचेज का एग्जांपल, ये वाला देखो 23,000 का 13 लिख दिया है, वैसे गड़बड़ किया है. ओके, सो परचेज रिटर्न बुक में टोटलिंग एरर है, मतलब परचेज रिटर्न अकाउंट में. नाउ थिंक व्हाट इज द नॉर्मल बैलेंस ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट? Debit. परचेज रिटर्न, Purchase return credit. दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग. परचेज रिटर्न का नॉर्मल बैलेंस इज क्रेडिट बैलेंस, राइट? इट वाज ओवरकास्ट, मतलब ज्यादा बता दिया. अभी आपको क्या करना है, कम करना है. तो कम करना We है तो will क्या करना है? credit it. We'll debit. क्रेडिट को कम करना है, क्रेडिट को Debit कम कर करने का तो debit डेबिट, होगा. क्रेडिट को क्रेडिट दोगे तो बढ़ जाएगा. क्रेडिट जो नॉर्मल बैलेंस होता है ना, उसको और नॉर्मल बैलेंस दोगे तो बढ़ ही जाएगा ना यार. तुमको पानी पूरी पसंद है और पानी पूरी मिलेगा तो ज्यादा खाओगे ना. तुमको पानी पूरी पसंद है और करेले का भाजी आ गया तो कम खाओगे. हाँ. तो डेबिट जो नॉर्मल बैलेंस होता है उसको और डेबिट दोगे तो और बढ़ेगा वो. ऑपोजिट क्रेडिट बैलेंस दोगे तो कम होएगा. तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, नॉर्मल बैलेंस इज क्रेडिट, उसको बढ़ाना है कि कम करना है, सोच लो पहले. कम करना है. कम करना है तो डेबिट क्या करो, करेंगे डेबिट उसको. करो उसको. तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगा? Purchase to suspense account. परचेज रिटर्न है, रिटर्न. Purchase return to suspense account. हाफ स्लीपिंग यू आर आई थिंक. परचेज रिटर्न टू सस्पेंस इट इज 1300. परचेज रिटर्न टू सस्पेंस 1300. लॉजिक बैठ रहा है दिमाग में. ओवरकास्ट मतलब ज्यादा टोटल बता दिया है, आपको कम करना है. कम करना है तो परचेज रिटर्न टू सस्पेंस. अगर बढ़ाना होता तो अंडरकास्ट हो गया होता, और बढ़ाना होता तो क्या एंट्री करते आप? Suspense account to So purchase. suspense to purchase returns account. It would have been ulta. Suspense to purchase return. Is that clear? All of you got that? समझा ये? बढ़ो. क्रेडिट को बढ़ाना है तो क्रेडिट, घटाने का तो डेबिट. याद रखना, डेबिट को बढ़ाना है तो डेबिट, घटाने का तो क्रेडिट. Salaries paid 8,500 have been posted to the salaries account as 5,800. Tell me the correct entry. Salaries paid 8,500. Salary account debit to cash account. Salary to cash 8,500. ये तो correct होना चाहिए. It was posted to salaries account as 5,800. गड़बड़ किस में है? सैलरी में है, कैश में है, दोनों में है, किस में गड़बड़ है? Salary. सैलरी में. तो सैलरी में आपने 5,800 लिखा है, कैश तो राइट ही है 8,500. दिस इज द रॉन्ग एंट्री. सैलरी में 5,800 और कैश में 8,500. इज दैट क्लियर? सैलरी में 5,800 एंड कैश में 8,500. नाउ थिंक व्हाट इज द एरर ओवर हियर? ये बीच में डैश आ जाएगा. नॉट टोटलिंग एरर का, पोस्टिंग एरर है ना. टोटलिंग एरर का तो एंट्रीज ही नहीं होता. रॉन्ग रिवर्स करेक्ट. पोस्टिंग एरर, दिस इज कमीशन का एरर है. दिस कम्स टू आई थिंक 1,700. रिवर्स इट, यू गेट कैश to salary to dash. 2,700. 2,700. Yeah, sorry. 2,700 is the gap, that is dash. You reverse it, you get what? 8,500 in cash. Salary it is 5,800. Gap made is 2,700. Can you cancel out anything? I think you can cancel cash entirely 8,500. You can cancel out salary to the extent of 5,800. You are left with 2,700 on the debit side. So what are you left with? Salary on the debit 2,700, dash on the credit 27,800. So your rectified entry is salary to suspense. Dash will become suspense 2,007. The dash will now become suspense 2,700. Is that clear?
Did you get the mistake, all of you? Any doubts? गड़बड़ was in salary. Are you able to identify that गड़बड़? एक अकाउंट में कि दो अकाउंट में, बस वो पता चल गया तो यू आर थ्रू. आधे से ज्यादा रेक्टिफिकेशन हो गया आपका. चल. Next one, credit sales of 2,500 to Trimuk Enterprise have been debited to their account as 250. What is the correct entry for credit sales to Trimuk Enterprise? Bol. Remove account debit to sales account. Trimuk to sales. Trimuk Enterprises debit. And amount will be 2,500. Correct entry में तो correct amount ही लिखना है. 2,500. Trimuk to sales it is 2,500, right? ये correct entry होना चाहिए. Okay. Now it was debited to their account as 250. तो गड़बड़ किस में किया है? त्रिमुख में गड़बड़ है कि सेल्स में गड़बड़ है? Their account मतलब sales account. Okay, their account. Their sales is a human being or what? There you use for sales or what? No, but there is an error in Trimuk. Trimuk personal there. Okay, there मतलब human personal. So गड़बड़ is in त्रिमुख. तो त्रिमुख में लिखा है 250. सेल्स में तो राइट ही है 2,500. ओके. देयर अकाउंट मतलब त्रिमुख अकाउंट में गड़बड़ है. सो त्रिमुख इट इज 250, सेल्स इट इज 2,500. बीच में ये डैश है, ये इफेक्ट दिया ही नहीं है, ये खाली पड़ा हुआ है. रिवर्स इट, यू गेट सेल्स टू त्रिमुख टू डैश. Sales it is 2,500, Trimuk it is 250, to dash it is 2,250. Can you cancel out anything over here? So you can cancel out sales, you can cancel out Trimuk. The extent of 250, you are left with 2,250 on the debit side, and dash is left on the credit side. So what's your rectified entry? Trimuk Enterprises to suspense. Trimuk to suspense 2,250. Is that clear? Trimuk to suspense it is 2,250. That's your rectified entry. Trimuk to suspense 2,250. Did you get the error? All of you? Next one, fourth one. Received interest of 4,050 has been posted to interest received account as 5,040. What is the correct entry for receiving interest? That you tell me first. What is the correct entry for receiving interest? Bol. Interest or bank to interest? Cash to interest या bank to interest. तो bank to interest लिख दो. That is 4,050. Sorry, cash to interest या bank to interest. That is 4,050. Okay. Now it was posted to interest received account as 5,040. गड़बड़ किस में? बैंक में गड़बड़ है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड में गड़बड़ है? Interest received. इंटरेस्ट रिसीव्ड में गड़बड़ है. इंटरेस्ट रिसीव्ड में कितना लिखा है? 5,040. इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट पोस्टेड है, पोस्टेड दिया हुआ है. तो पोस्टिंग एरर इज इन द लेजर वन अकाउंट. बैंक इज राइट ओनली एट 5,040. सॉरी, बैंक इज राइट ओनली एट 4,050. बीच में आ जाएगा गैप. गैप कितने का है? तो आई थिंक 990 रुपीज आ रहा है गैप. 990 का गैप आ गया. दैट इज डैश. डैश मतलब इफेक्ट ही नहीं है. रिवर्स करो, यू गेट इंटरेस्ट इज 5,040 टू बैंक 4,050 to dash 990. And then you can cancel out, I think, bank entirely. Interest to the extent of 4,050 gone. You are left with what? What are you left with? You are left with interest to that dash will now become what? Suspense. Dash will now become suspense. Interest to suspense. Interest to suspense. Is that clear? Interest account debit to suspense account. Interest account debit to suspense account. That's your rectified entry. Mistake samjha? What type of error is this? Commission, omission, or principal?
What was the type? Omission. Is that omission? Commission. Commission. किया लेकिन wrong किया. Omission में तो आपने कुछ किया ही नहीं. If you don't post, if you don't record, then it is omission. यहाँ पे लिखा है ना आपने, wrong amount लिखा है, 4050 का 504. That's error of commission. Okay. Then next one is paid 8950 to Manali has been debited to Sonali's account. Think, what is the correct entry for paid 8950 to Manali? क्या होना चाहिए? Correct entry क्या होगा आपका? Manali to cash होगा 8950. This is quite simple. करना था Manali to cash, कर दिया debit Sonali को. तो what is the wrong entry? The wrong entry is, I think, Sonali to cash 8950. Getting that? करना था Manali to cash, कर दिया debit to Sonali, तो Sonali to cash. Cash तो right ही है, Manali का Sonali हो गया. ऐसा नहीं होगा कि मनाली सोनाली दोनों को डेबिट हो जाए, ऐसे नहीं होगा. ओके, मनाली सोनाली में से एक डेबिट होगा. पोस्टिंग इज डन इन वन अकाउंट ना. सो आइदर मनाली या सोनाली. तो मनाली के जगह सोनाली हो गया, एरर ऑफ कमीशन. रिवर्स इट, यू गेट व्हाट? कैश टू सोनाली, कैश टू सोनाली 8950. कैन यू कैंसल आउट एनीथिंग? तो आई थिंक कैश गॉन एंड यू आर लेफ्ट विद मनाली टू सोनाली 8950. Yes, Moksh. Have a doubt? Got it? Is that clear? Last one. Sorry, second last. Bad debts recovered 8,400 had not been posted in the cash book. Bad debts recovered 8,200. पहले तो correct entry सोचो क्या होगा bad debts recovery. Cash account debit to bad debts recovery. Cash to bad debt recovery. ये मिला सबको. Cash to bad debt recovery होना चाहिए. It was not posted, actually not recorded होना चाहिए. Not recorded in the cash book. What is a cash book? What is a purchase book? What is a sales book? What is a returns book? What are these books? Journal. Journals. If you have not written something in a journal, is it possible to post it somewhere? No. So is there any wrong entry for this transaction? Think about it. No wrong entry. Why? Because this is what type of error? You missed something to record in a journal only. It's omission. Complete omission. That's your complete omission error. Got it? So cash book में ही नहीं record किया, posted नहीं, recorded in cash book. So not recorded in cash book मतलब no effect anywhere, no debit, no credit. Okay? अगर ledger में बोला होता not posted to bad debt recovery account, तो फिर cash to dash आता. Cash में हुआ है, bad debt recovery account में नहीं हुआ है. ये complete omission, क्योंकि journal ही भूल गए. Journal में खा गए तो journal no entry, complete omission. The right entry itself is your rectified entry, that is cash to bad debts recovery. Cash to bad debts recovery 8,200. Cash to bad debts recovery, that is 8,200. That's your rectified entry. Is that clear? And the last one, seventh one, total of purchase book was overcast by 6,200. वापस आया totaling error. Is there any wrong reverse correct entry for totaling? No. Purchase book मतलब कौन सा account? Purchase account. Purchase account का normal balance क्या होता है सोचने का? What is the normal balance of purchase? Debit. अभी पढ़ो उधर. Debit is overcast. Overcast means over total. ज्यादा बता दिया. Debit बढ़ गया. अभी क्या करना है? और बढ़ाना है कि कम? Increase the credit to nullify the excess debit. हाँ, तो what will be your rectified entry? Will it be purchase to suspense या suspense to purchase? Suspense to purchase. Suspense to purchase. Purchase को credit देना है क्योंकि उसको कम करना है. Debit will go to suspense. Automatically, all corresponding debit credit will go to suspense in your casting errors. Got that? Make a suspense account. Check whether it tallies.
सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? ईशा, what will be the opening balance of suspense? Check. Debit balance. Debit balance, absolutely right. You got it. Credit बड़ा है, debit छोटा है, तो suspense debit में बैठा हुआ है. So to balance BD लिख दो suspense में कितना है? 1050, 1040, 1040 on top. They have given that. Now keep on posting. Keep on posting. Purchase return to suspense. The suspense may buy purchase returns account, that is 1300. Sorry. Salary to suspense. The suspense may buy salary account, that is 2700. Trimuk to suspense. So Trimuk में to suspense, suspense में buy Trimuk enterprises account 2250. Interest to suspense. Interest में to suspense, suspense में buy interest account 990. Manali to Sonali, cash to bad debts recovery, suspense to purchase. So suspense में to purchase account 6200. Check whether it tallies. Suspense tally हो रहा है कि नहीं, check करो. हो रहा है? नहीं हो रहा है. I think there is a gap. It is not tallying. Is it? It is tallying. It is tallying. Yeah. 2 plus 2 5. Okay, yeah. 7240. 7240. Yeah. 7240 पे हो रहा है tally. Yes. It is tallying on 7240. मिला? What does that indicate? What type of errors have been rectified? All the one-sided errors have been rectified. All one-sided have been rectified. Okay. Two-sided, no guarantee from suspense. Two-sided का कोई guarantee नहीं है. Take out sum number 22. Sum number 22. Sum number 22 is a peculiar sum. Same columns you have to draw: wrong, reverse, correct, rectified. It is mainly for casting errors. पूरा sum casting error पे based है. तो आपको casting error perfectly समझ में आ जाएगा ये sum करोगे तो. Wrong, reverse, correct, rectified. 22. Sum number 22. It's a simple problem based entirely on the casting errors, totaling errors. Machinery account. अच्छा पहले ऊपर देखो. Suspense account of a business shows a debit balance of 1075. अभी तो प्लेट में सर्व करके दे दिया है. कौन सा बैलेंस है सस्पेंस का? Debit balance. Debit balance. So two balance brought down. Got it? Let's begin. First one. Machinery account had been underbalanced by 950. What do you mean by underbalanced? Undercasted मतलब the amount written is less. Less. Amount written is less. So you have to increase it. Okay. Machinery का normal balance क्या होता है? Debit की credit? What is the normal nature of the balance? Debit balance. अभी क्या करना है? Debit को बढ़ाना है कि कम करना है? Increase. Increase. बढ़ाना है. तो डेबिट को बढ़ाना है तो क्या करोगे? और डेबिट दोगे, है कि नहीं? तो आपका रेक्टिफाइड एंट्री. इज देयर एनी रॉन्ग रिवर्स करेक्ट एंट्री फॉर टोटलिंग? इज देयर एनी रॉन्ग रिवर्स करेक्ट एंट्री फॉर टोटलिंग एरर? नो. So no wrong, no reverse, no correct. What's your rectified entry? Machinery to suspense. Machinery to suspense. Machinery to suspense. That will be 950. Straight rectified entry. Machinery to suspense 950. All of you got that? Debit को बढ़ाना है और डेबिट दे दो. Our debtor Hari's account has been balanced in excess amount by 75. हमारा डेटर था, वो ज्यादा बैलेंस बता दिया उसमें. तो मुझे सोच के बताओ वापस. बैलेंस्ड एक्सेस, बैलेंस लेस, कास्टिंग, टोटलिंग. तो बैलेंस का कोई एंट्री होता है कभी? जर्नल एंट्री होता है बैलेंस का? कभी नहीं होता. रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट इज नहीं. तो डेटर है वो क्या हो गया? बैलेंस्ड इन एक्सेस मतलब ओवरकास्ट हो गया कि अंडरकास्ट हो गया? Overcast.
ओवरकास्ट हो गया, ज्यादा हो गया, तो अभी क्या करना है, उसको कम करना है. सो डेटर का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? डेबिट. डेबिट. उसको बढ़ाना है कि कम करना है? Suspense to hurry. कम 7. करना है. या सस्पेंस टू हरी, यू वांट टू रिड्यूस इट, तो सस्पेंस टू हरी ब्रैकेट में यू कैन राइट डेटर 750. Suspense to hurry is your debtor 750. Did you all get the logic? डेबिट को कम करना है तो गिव इट अ क्रेडिट. तो मैंने हरी को क्रेडिट दे दिया, वो कम हो गया. Corresponding debit goes to suspense. Total of purchase book is overcashed by 125. Purchase book means purchase account. Casting error है मतलब no wrong, no right, no reverse. सीधा rectified. What is the normal balance of purchase? Debit. डेबिट क्या हो गया? ओवरकास्ट मतलब ज्यादा हो गया. तो अभी क्या करना है आपको? What do you need to do? परचेज को बढ़ाना है कि कम करना है? reduce it. रेड्यूस करना है. तो डेबिट को रेड्यूस करना है तो गिव इट अ Debit. Credit. क्रेडिट. डेबिट को कम करना है तो गिव इट अ क्रेडिट. ओके. बढ़ाना है तो डेबिट, कम करना है तो क्रेडिट. तो सस्पेंस टू परचेज, सस्पेंस टू परचेज 125 सस्पेंस टू परचेज. जो सेम नेचर होगा ना, डेबिट को डेबिट दोगे तो बढ़ेगा, क्रेडिट को क्रेडिट दोगे तो बढ़ेगा, ऑपोजिट दोगे तो कम होएगा. याद रखना. Fourth one, the total of sales return book is undercast by 205. What is the normal balance of sales return account? Debit balance. Debit balance. Wrong reverse correct तो है ही नहीं क्योंकि कास्टिंग एरर है. सेल्स रिटर्न अंडरकास्ट हो गया. अंडरकास्ट मतलब गलती से कम हो गया. अभी क्या करना है उसको? डेबिट ही करना है. Sales. डेबिट करना है, इंक्रीज करना है. इंक्रीज करना है तो डेबिट करना है. डेबिट दोगे तो बढ़ेगा. तो व्हाट विल बी योर रेक्टिफाइड एंट्री? टेल मी. Sales return to suspense. Sales return to suspense 205. 205. All of you are getting this casting error? Any doubt? Anyone? Still not able to get casting errors? Comfortable? Casting error, one sided error, एक ही अकाउंट को इफेक्ट करेगा और कोई जर्नल एंट्री नहीं है उसकी. Cash column of cash book has been balance short by 120. Balance short, total short, all are casting error. Okay. So no wrong, no reverse, no correct. Cash column means which account? Cash account. Cash account has been balance short. मतलब कम बताया है, अभी क्या करना है? You want to increase it. What balance does cash have? What is the normal balance of cash? Debit balance. Debit balance. Debit balance होता है, ट्रायल बैलेंस होता है, डेबिट क्रेडिट. नॉर्मल बैलेंस ऑफ कैश इज डेबिट. तो अभी कम हो गया, अभी बढ़ाना है. डेबिट को बढ़ाना है तो क्या करोगे? बोलो. Increase the debit. Increase the debit. So cash to suspense. Cash to suspense 120. यही अगर ओवरकास्ट हुआ होता तो सस्पेंस टू कैश, अंडरकास्ट हुआ है तो कैश टू सस्पेंस. कंफर्टेबल? All 5 errors clear? Come on, make a suspense account, check whether it tallies. Suspense बना लो. This is your suspense account. Okay, what balance is suspense having on top? They have given you clearly. Suspense is having Debit a balance. Debit balance. So to balance BD, it is 1075 and keep on posting. Machinery to suspense. So suspense में buy machinery 950. Suspense to hurry. So suspense में to hurry 750. Suspense to purchase. So suspense में to purchase So hurry is 75. 125. Hurry is 75. 25, not 75. Okay. Hurry is 75. 75. Then suspense to purchase. Then sales return to suspense. So suspense may buy sales returns 205. Cash to suspense. Suspense may buy cash 120. Check whether it tallies. 1275. दोनों साइड. Yes, sir. दोनों साइड आ रहा है 1275. चेक कर लो. दोनों साइड आ रहा है, इसका मतलब योर वन साइडेड एरर्स हैव बीन रेक्टिफाइड. ये गारंटी मिल गया. टू साइडेड शायद हुआ हो, शायद ना हुआ हो. अपने पास तो जो एरर्स था हमने तो सबको रेक्टिफाई कर लिया. गॉट दैट?
Okay. Come to sum number 27. Next sum number 27. 27. Draw the columns, wrong, reverse, correct, rectified. 27 sum. Okay. 27th sum. Page number 100. Page number 100. Sum number 27. ध्यान से पढ़ो और देखो. First line. Okay. Read it properly. In taking out a trial balance, a bookkeeper finds that the debit exceeds by 41. Being desirous of closing his books, he places the difference to a newly opened suspense account. After recording the difference in suspense, he discovers the following. So, looking at the statement, can you tell me what is the balance in suspense? Debit balance. Credit balance. balance. 41. Credit balance. Credit balance. Suspense account will have a credit balance. How? Read. Because the debit Excess excess. of debit. Exactly. The debit is in excess. Debit side बड़ा है, credit side छोटा है. तो gap किधर है? Credit में. तो gap fill up करने के लिए suspense डाला. तो trial balance में जो side बड़ा होगा, suspense will sit on the opposite side always. Okay. So credit balance. In this sum, suspense is having a credit balance. ईशा को समझा? पक्का? Okay. So credit balance of suspense. All of you comfortable with that first part? Any doubt? Let's proceed with the errors. Okay, then first one. Sum of 83 received from X posted to his debit as 38. Tell me, what is the correct entry? Sum of 83 received from X. Cash to X. Cash to X, 83 rupees. This should be the correct entry, right? Cash to X, 83. Right? Now, it was posted to his debit as 38. गड़बड़ किस में किया है? X में, cash में. किस में गड़बड़ है? X. X में क्या किया है? उसके डेबिट में 83 लिखा है. तो X के डेबिट में 38 लिखा है. तो X को डेबिट दिया है 38 का. कैश में कोई गड़बड़ है? No गड़बड़ in cash. Cash is right only. So cash will be 83 only. 2 dash. 2 dash. डैश में कितना आएगा? आई थिंक 121. दोनों डेबिट हो गए. कैश और एक्स दोनों डेबिट हो गए. ऐसा मत सोचना कि एक्स को डेबिट दिया तो कैश को क्रेडिट दिया है. नहीं, गड़बड़ खाली एक्स में. कैश इज राइट ओनली. तो एक्स कैश टू डैश. रिवर्स करो तो गेट डैश टू एक्स टू कैश. दिस इज 121. एक्स में 38, कैश में 83. You can cancel out, I think, cash entirely. X cancel नहीं हो सकता, so you are left with suspense to X. Suspense to X 121. Suspense to X 121. Is that clear? Understood? Suspense to X, that is 121 rupees. गड़बड़ क्या थी? एक्स में गड़बड़ थी. क्रेडिट देने के बदले डेबिट दिया, तो अभी डबल क्रेडिट देना पड़ा. डबल मतलब वो ऐड करके 38 प्लस 81, 83 प्लस 38, 121 का क्रेडिट दिया उसको. सी द नेक्स्ट वन. 62 rupees written off as depreciation on furniture, not posted to depreciation account. What is the correct entry for charging depreciation on furniture? Depreciation to furniture. Very good. Depreciation is a non-cash expense. So correct entry for depreciation is depreciation to furniture, 62 rupees. Depreciation account debit to furniture account, it is 62. Depreciation is expense, debit all expense, and asset कम हो रहा है, तो credit that goes out. Asset कम हो गया, तो depreciation account debit to furniture account. Okay. It's a non-cash expense. Remember, it's a non-cash expense. Okay. Cash नहीं जा रहा है, furniture जा रहा है.
So debris to furniture is the correct entry. Now listen very carefully. It has not been posted to depreciation account. Is it complete omission or partial omission? Use your brains. Partial omission. Partial. So can you tell me what is the wrong entry? Dash account debit to furniture account. Dash account नहीं होता, मतलब वो dash है, वो कुछ effect ही नहीं है. But that dash to furniture. Dash to furniture, okay, dash to furniture. ऐसा मत समझना dash कोई account है, hello. No, I know that it is And blank, but not that you. makes it easy. Yeah. In general, I am telling all of you, dash कोई account का नाम नहीं है, मालूम है ना सबको, hello. Dash means no effect. वो खाली रह गया है, debit खाली है, खाली credit में लिखा हुआ है. Debit is empty, only credit में लिखा हुआ है. Reverse it, so you get furniture to dash. Can you cancel out anything? So furniture gone. What are you left with? So depreciation to suspense. Depreciation to suspense. Depre account debit to suspense 62 rupees. Is that clear? One-sided error. Error of what? What was this error? Commission, omission, or principal? Error of omission, partial omission. Partial omission. Very good. Sir, but over here, when we start the sum, why can't we use suspense in the wrong and reverse part? Did you know when you were passing the wrong entry, was there any suspense in your book at the time of wrong entry? No. That's why we are using dash. Suspense came into picture only after preparing trial balance. So now you are rectifying. Your rectified entry is passed after trial balance. Your wrong entry is passed way before when you were doing the actual account. That time you did not know any suspense thing. You can't use suspense there. Got it? ₹1,000 paid for new furniture has been charged to repairs. What is the correct entry for 1,000 paid for new furniture? Cash to furniture. बाप रे, heart attack दे दिया तुमने. Oh, sorry, furniture to cash. Furniture to cash. ऐसा heart attack मत दो मेरे को. Furniture to cash is the correct entry. बराबर है? It was charged to repairs. गलती से repairs को charge कर दिया. तो what should be the wrong entry? Think. Repairs to cash. Repairs to cash. करना था furniture to cash, कर दिया repair to cash. What type of error was that? What type of error? Principal, commission, omission. Principal. This was error of principal. Okay, पहले भी बहुत बार किया ना मैं, long term, short term, asset with expense. The rectified entry is furniture to repairs. Rectified entry is furniture to repairs 1,000. Next one is a bit tricky one. Let's see who gets it. Discount of ₹21 allowed to a customer has been credited to his account as 20 rupees. पहले तो correct entry बोलो. What is the correct entry for discount allowed to a customer? Not we. Discount allowed. Discount allowed. A customer's name, discount allowed to cash. एक मिनट. पहले correct entry बोलो. Not Discount we, not we, allowed not to debtor. Discount allowed to debtor. Discount allowed to debtor. Discount allowed. Let others try. Discount allowed to debtor. Does anyone feel it should be discount allowed to cash? No, it's a non-cash expense. Okay, discount allowed to debtor is the correct entry. 21 rupees. What is the wrong element? It was credited to his account as 20 rupees. गड़बड़ किसमें? Debtor के account. Debtor के account में गड़बड़ है ना. Discount allowed is 21 only. Debtor में कितना लिख दिया आपने? 20. So 2 dash 1 rupee. 1 rupee का gap आ गया. Reverse it, you get what? Reverse it, you get dash debtor to discount allowed. Dash debtor to discount allowed. Can you cancel out anything? Discount allowed entirely gone. Debtor, debit, debtor, credit gone to the extent of 20 rupee, left with 1 rupee. So 1 on debit, 1 on credit. Dash बचा है और debtor बचा है, तो suspense to debtor 1 rupee. Suspense to debtor 1 rupee. Is that clear? Mistake समझा? गड़बड़ was in debtor. Partial omission क्या? Sorry, commission error. This was an error of commission. Wrong amount.
Total of sales return book has been added 1 rupee short. Total. देख के click होना चाहिए. What type of error? Casting. Is there any wrong reverse correct entry? No. Sales return book means sales return account, one and the same. Sales return account का normal balance क्या होता है? अपनी अंतरात्मा से पूछो. What is the normal balance of sales return account? Debit balance, right? Debit balance. अब वो क्या हुआ है? कम हो गया कि ज्यादा हो गया है? पढ़ो. Added 1 rupee short. Means what has happened? कम हो गया है. अभी क्या करना है? बढ़ाना है कि कम करना है? बढ़ाना है. So डेबिट को बढ़ाना है तो क्या करोगे? Give it a further debit. डेबिट को बढ़ाना है तो डेबिट. So what will be your rectified entry? Think. Suspense to sales return या sales return to suspense? क्या होना चाहिए? बोलो. 1 rupee short means that we are there's a difference of 1 rupee. that So is we have to increase the debit. Increase the debit, right? So what will be your rectified entry? Sales return to suspense. Sales return to suspense. 1 rupee. Okay. Next one. An item of sale of 68 was posted as 86 in sales account. पहले तो item of sale of 68. What is the correct entry for item of sale? Goods sold. What is the entry for goods sold? What is the entry for goods sold? Hello? Cash to sale. Cash to sales. ये समझा? Cash to sales 68. कैश ही है ना, पार्टी का नाम नहीं है, फॉर कैश कुछ नहीं है, पार्टी का नाम गया, बुक नहीं है, परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न बुक, सो इट बिकम्स अ कैश ट्रांजैक्शन. So cash to sale 68. It was posted as 86 in sales. गड़बड़ किसमें? कैश में कि सेल्स में? Sales. कैश तो बराबर है, सेल्स में कितना लिखा है? 86. तो गैप कितने का आ गया? आई थिंक 18 रुपीज का. रिवर्स करो, बस यहां तक हो गया तो अभी तो इजी है. सेल्स टू कैश टू डैश 86, 68, 18. Can you cancel out anything? I think you can cancel cash. You can cancel sales to the extent of 68. So bacha 18. What's your rectified entry? It is sales to suspense 18 rupees. Sales to suspense 18 rupees is your rectified entry. Did you get that? Sales to suspense. Make a suspense account. Check whether it tallies or no. What is the opening balance of suspense? Debit balance or credit balance? Check. What is the opening balance in suspense? Debit or credit? Credit. Credit. Debit side was in excess, so credit balance. Okay. Start posting suspense 2x. So suspense में 2x 121. Depre to suspense. Suspense में buy depre 62. Furniture to repair में कोई suspense नहीं है. Suspense to debtor. Suspense में 2 debtor 1 rupee. Sales return to suspense. So suspense में buy sales returns 1 rupee. Sales to suspense. Suspense में buy sales 18 rupees. Check whether it tallies. I think it tallies on 122. Tallies on 122. Is that right? Tallies on 122. 122. Got that? Okay. Comfortable all of you? समझा यहाँ तक? Do sum number 5. Last sum. Sum number 5. Sum number 5 का 1, 2, 3, 4, 5 करो. 6th वाला मैं बताता हूँ.
लास्ट सम. नो सस्पेंस, मतलब सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाना है, उसमें कोई बैलेंस नहीं दिया है, बट सस्पेंस यूज कर सकते हो एंट्री में टू रेक्टिफाई. यू कैन यूज सस्पेंस टू रेक्टिफाई. सम नंबर 5. 1 2 3 4 5 करो. सिक्स्थ वाला आई विल टेल यू हाउ टू डू इट. Sum number 5, last sum. Wrong, reverse, correct, rectified. Come on. 5, right? 5. Fifth sum. Sum number 5. Last sum number 5. Come on. So omitted from the books of account means it was existing entry was cancelled. Omitted from the books of account मतलब omitted. कोई books of account में entry नहीं है. Complete omission. It's complete omission. Sorry. First 3 were complete omission. Did you all get that? First 3 were complete omission. Yes. Correct itself is rectified. Okay. Fourth one, cash paid to Maya. It is Maya to cash. Sorry. It was entered in the cash book but was not posted to her personal account. So can you tell me the wrong entry?
क्या होगा? Dash account debit to cash. Dash to cash. Dash to cash. Okay. Reverse it, you get cash to dash. Partial omission. Cash cut. You're left with Maya to suspense. Maya to suspense. Fifth one. Purchase goods from Sharda Enterprise 3,500 on credit was not posted to their personal account. Purchase goods from Sharda Enterprise, so purchase to Sharda Enterprise, that is 3,500. That is the correct entry. Was not posted to their personal account. Can you tell me the wrong entry? Sorry. What is the wrong entry? Hello. समझा इसका wrong entry? Dash account, purchase account to dash. Purchase to dash, and rectified would be suspense to Sharda. Suspense to Sharda. 3,500. Suspense to Sharda, it is 3,500. Last one. यहाँ तक मिला? First 5 are clear, all of you? Any doubts? Last one. Short debit has been given to salary account 500 and short credit has been given to interest received account 500. This is the first time you are coming across two errors together. Sir, can I leave at college? Just 1 minute, just last one. तो उधर login करके रख देना. Tell me, what error is this? Two errors together. कुछ click हो रहा है? Credit means instead of overcast, undercast, they have given us as credit and हाँ, debit. बराबर है. But दो mistake साथ में दिया है. Compensating. Compensating error. It is compensating error. Okay, not compromising. Compensating error. So compensating error में क्या होता है? दो mistake रहेगा. Debits and credit nullified. दिख रहा है? Amount भी same है. क्या हुआ है? Short debit has been given to salary. Salary को गलती से कम बताया debit में. और interest received को कम credit दिया है. दोनों का amount 500 है. दोनों nullify कर रहे हैं एक दूसरे. This is what is compensating. तो इसमें सेम टोटलिंग के जैसा ही है. सो नो रॉन्ग, नो रिवर्स, नो करेक्ट एंट्री. सीधा रेक्टिफाइड एंट्री. सोचो क्या करना है. सैलरी को शॉर्ट डेबिट है तो क्या करोगे? सैलरी टू इंटरेस्ट बढ़ा दो. हाँ, सैलरी को बढ़ाओ, गिव इट अ डेबिट. एंड इंटरेस्ट का शॉर्ट क्रेडिट है तो उसको क्रेडिट दो, तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा. तो सैलरी टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 500. सैलरी को शॉर्ट डेबिट था तो डेबिट किया, इंटरेस्ट को शॉर्ट क्रेडिट था तो क्रेडिट. आता नहीं है, खाली एक ऐसा एग्जांपल के लिए डाला हुआ है अंडरस्टैंडिंग. टू एरर्स टुगेदर, दैट्स रेक्टिफाइड. वो दो अकाउंट को यूज करके ही मिल जाएगा आंसर आपको. गॉट इट? दैट्स योर रेक्टिफाइड एंट्री ऑल फॉर द डे. होमवर्क आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से. सस्पेंस वाला सम होगा, सस्पेंस अकाउंट बनाना है, टैली करना है. तो डाउट्स है तो रुको, अदरवाइज यू कैन रीड. Sir, explain this.